Hello everyone, myself Tejal. I am here to discuss this topic that is bandages. Bandages are not something which only the medical people should know. Bandages are something that everyone should learn about. बैंडेजेस हमें ऐसा नहीं कि जो मेडिकल फील्ड वाले हैं उनके लिए ही इम्पोर्टेंट है बैंडेजेस सबके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर कोई छोटा बच्चा गिर जाता है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को चोट आ जाती है तो हमें वो पता चलना चाहिए कि किस टाइप से हमें वो बैंडेजेस बांधना है क्योंकि बैंडेजेस एक ही टाइप का नहीं होता देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस वी आर गोइंग टू लर्न ओके इफ यू आर हैविंग इंजुरी और वुंड ऑन द जॉइंट मतलब अगर जॉइंट पे अगर आपको चोट आई है या फिर आपके हेड पे इन द हेड आपको चोट आई है या फिर शोल्डर के पास आपको चोट आई है दैट इज कंधे पर तो हमें कौन से टाइप ऑफ बैंडेज बांधना है ओके इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंडेजेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजेस एज वेल प्रिंसिपल्स मतलब कि हमें उसमें सीखना है कि जब भी हम बैंडेज टाई कर रहे हैं किसी को तो उस टाइम हमें कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए ठीक है तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन आई वुड लाइक टू start with a small quote which is seen on the screen that is mindset is what separates the best from the rest. It is all about your mindset. If you're having a positive mindset you will have a positive aura around you. Okay, so let's begin. Bandages definition. A bandage is any gauze or cloth material used for any of the purpose to support, to hold, or to immobilize the body part. Bandages is any gauze. What is gauze? Gauze is something like this, like a mesh work. Okay, so this is what gauze is, white color का आप सब लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहता है. Okay, so this is what a gauze looks like. और cloth material, cloth मतलब कपड़े जैसा. Okay, used for any of the purpose to support. Support is to give support, उसको थोड़ा नीचे से सपोर्ट देने के लिए, टू होल्ड मतलब थोड़ा रोक के रखने के लिए, और टू इमोबिलाइज द बॉडी पार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमोबिलाइज? इमोबिलाइज मतलब कि उसका हालचाल नहीं होना चाहिए, वो जो पार्ट को इंजुरी हुई है वो पार्ट हिलना नहीं चाहिए. ओके, द पार्ट शुड स्टे इन वन प्लेस. ओके, सो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन इज. अ बैंडेज इज एनी गॉज और क्लॉथ मटेरियल यूज्ड फॉर एनी ऑफ द पर्पस टू सपोर्ट, दैट इज टू सपोर्ट, टू होल्ड और टू इमोबिलाइज मतलब कि वो हिलना नहीं चाहिए. कौन सा पार्ट? जिसको इंजुरी हुई है, जिसको चोट लगी है. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग. First point, patient should be in a comfortable position and it should be convenient for the nurse. That is, patient को हमें comfortable position देना है और nurse के लिए भी वो comfortable चाहिए to bandage that part. Okay. Second point, the position of the bandage part should be supported and elevated if necessary. The whatever we are going to bandage, like for example, if we are going to put a bandage on the hand, so we should always give support. Like हाथ को अगर हम बैंडेज कर रहे हैं तो हमें नीचे से हाथ को सपोर्ट देना है और थोड़ा इलिवेट करना है. इलिवेट मतलब थोड़ा ऊपर की साइड करना है. ओके. थर्ड पॉइंट, द बैंडेज शुड accomplish its purpose. बैंडेज शुड accomplish its purpose मतलब कि जो रीजन के लिए हम बैंडेज लगा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सपोर्ट के लिए बैंडेज लगा रहे हैं तो उतना वो टाइट रहना चाहिए. दैट शुड गिव सपोर्ट टू द इंजर्ड पार्ट. ओके. इमोबिलाइज, इमोबिलाइज मतलब कि उसका हलचल नहीं होना चाहिए. अगर हम बैंडेज उसका हलचल नहीं होना चाहिए इसलिए लगा रहे तो हमें उसको टाइटली लगाना है ताकि उसका हलचल ना हो और उसने ड्रेसिंग को होल्ड किया हो. ओके. फोर्थ पॉइंट, skin surfaces should be separated. They may be separated by either gauze or cotton in the application of cast. Again, fourth point, what it tells us that अगर cast apply है, cast मतलब like plaster, फ्रैक्चर होने के बाद जो प्लास्टर लगाते हैं हम उसको कास्ट बोलते हैं. अगर कास्ट अप्लाई किया तो वी डोंट डायरेक्टली अप्लाई द कास्ट ऑन द स्किन. डायरेक्टली हम हाथ पे वो अप्लाई नहीं करते. अगर आपके पेरेंट्स में या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को कभी प्लास्टर लगाने की नौबत आई हो तो आपने देखा होगा कि प्लास्टर से पहले कभी भी एक ड्रेसिंग रहता है. डायरेक्टली प्लास्टर अपने स्किन सरफेस पे मतलब अपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते. उससे पहले हम बैंडेज अप्लाई करते या फिर गॉज और कॉटन अप्लाई करते. ओके. नेक्स्ट, fifth point, exert even pressure as far as possible. The bandage should be done in the direction of venous circulation. Exert even pressure मतलब कि जब हम बैंडेज लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तब से हमें प्रेशर सेम रखना है जब तक बैंडेज का एंड नहीं होता है लगाना. ठीक है. लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से हमें वही प्रेशर रखना है एंडिंग तक, बैंडेज का लगाना खत्म होने तक. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तुम लोग अच्छे से एकदम टाइटली पकड़ के एकदम अच्छे से लगा लो और फिर उसके बाद में लूज छोड़ो. उसका कोई कोई भी ये नहीं होने वाला है. हमें हमारा पर्पस कंप्लीट नहीं होने वाला है. बिकॉज व्हाट विल हैपन इवेंचुअली इज द बैंडेज विल गेट लूज.
बैंडेज लूज हो जाएगा लास्ट तक और उसके बाद में वो छूट जाएगा, सो इट वुड नॉट बी यूजफुल फॉर अस। इसलिए हमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक बैंडेज टाइटली ही लगाना है। Next point, sixth point, never apply a wet bandage as when is applied it tends to shrink and becomes tight as it dries. कभी भी गीला बैंडेज नहीं लगाना है, बिकॉज जब हम गीला बैंडेज लगाते हैं हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये थोड़ा लूज है और टाइट करने की जरूरत है और टाइट करने की जरूरत है, और हम वेट बैंडेज इतना टाइट कर देते हैं कि जब वो ड्राई हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और उसकी वजह से हमारा सर्कुलेशन खराब हो सकता है, हमारा ब्लड सप्लाई खराब हो सकता है। सेवन पॉइंट, एग्जामिन द बैंडेज पार्ट फ्रीक्वेंटली फॉर पेन एंड स्वेलिंग। हमेशा जो पार्ट को हमने बैंडेज किया है, क्योंकि वो पार्ट क्लोज रहता है बैंडेज करने के बाद, तो हमें हमेशा उस पर ध्यान रखना है कि पेन है क्या, स्वेलिंग है क्या, ओके, कोई तकलीफ हो रही है या फिर स्वेलिंग आई है, सूजन आई है, तो वो देखना है। 8 पॉइंट, all turns of bandages should be made in clockwise direction unless there is some special reason. Clockwise मतलब कि हमेशा हमें ऐसे ऐसे तरीके से बैंडेज को अप्लाई करना है, okay, clockwise, not anti-clockwise. This is anti-clockwise, this is clockwise, okay. Then 9 point, do not apply the bandage too loosely because it may slip and expose the wound. As we have already talked about it, we should always apply the bandage tightly, not loosely. अगर हम loosely bandage apply करेंगे तो जब हम हमारी डेली एक्टिविटीज करेंगे, जैसे कि कोमिंग योर हेयर, ब्रशिंग योर टीथ, ओके, गेटिंग रेडी फॉर योर ऑफिस, उस टाइम क्या होगा, अगर बैंडेज लूजली बांधा तो वो बैंडेज सटक जाएगा हाथ से, वो नहीं रहेगा उसके प्लेस पे, तो कोई यूज रहेगा क्या बैंडेज का, नहीं रहेगा। इसलिए हमें बैंडेज हमेशा टाइटली ही बांधना है, नॉट दैट मच टाइट कि वो सर्कुलेशन ही अफेक्ट कर दे, थोड़ा, एकदम थोड़ा लूज बट ज्यादा टाइट, ठीक है। 10 पॉइंट, do not cover the ends of fingers and toes unless if necessary. Why? कभी भी जब भी हम बैंडेज अप्लाई करते हैं तो we always apply the bandage whole part, but we never cover this tips of fingers, we never cover it. Why? Because why it is kept open? To check for the circulation. If it is getting bluish, that means कि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो चुका है, ओके, या फिर कभी कभी बहुत ही ज्यादा सफेद हो जाते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स भी रहते हैं उनमें कभी भी ये टिप ऑफ द फिंगर कभी भी कवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दूसरा तो हमें कुछ दिखता नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी बैंडेज या फिर प्लास्टर रहता है, तो इसलिए हम टिप्स ऑफ फिंगर हमेशा ओपन रखते हैं ताकि हमें सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं, ठीक है, वो समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट, so this were all about the principle of bandages. I hope you are clear with it. Next, we are going to see about the types of bandages. First is circular bandage. What is circular bandage? Circular bandage is like एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बांधते हैं in a circular pattern. So that is what circular bandage is. You can see it in the picture. Used to start and end the bandages. In this bandaging, the layers of bandages are applied over the top of each other. That is what I said. एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये बांधते हैं. That is what is circular bandaging. Second is spiral bandage. Spiral bandage, the bandage ascends in a spiral manner so that each turn overlaps the preceding one. मतलब क्या है कि जब भी हम बैंडेज करते हैं तो जो पहली लेयर है, पहली लेयर के ऊपर थोड़ा सा, पहली लेयर के ऊपर लेके फिर और एक टर्न मारना है, फिर अब जब सेकेंड लेयर आ गया तो उसके ऊपर और एक थर्ड लेयर का टर्न मारना है, मतलब थोड़ा सा प्रीवियस लेयर पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बैंडेज सिक्योर हो जाता है, लाइक इट इज सीन इन द पिक्चर, ओके, नॉट पूरा उसके ऊपर से नहीं लेना है पर थोड़ा उसके ऊपर से लेना है, सो दैट कि जो पहली लेयर है वो क्लोज हो जाए। थर्ड इज फिगर ऑफ इट. It consists of making oblique overlapping turns, ascent, descent alternatively. Now, what is oblique? This is what oblique is like. थोड़ा आड़ा, okay? It consists of making oblique overlapping turns, ascent and descent alternatively. Now in school we have already learned what is ascending order and what is descending order, okay? Ascending is like this and descending is नीचे से ऊपर. So figure of 8 में क्या होता है? We'll see the picture. So yes, this is figure of 8 bandage. Figure of 8 bandage, as we have discussed earlier, it goes ascending and descending pattern as well. Ascending मतलब कि ये ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है. Okay, you can see here figure of 8 दिख रहा है, like it resembles somewhat like 8. Okay, 8 number. ये कहाँ देखते हैं हम लोग? Like in knee joint. Okay, यहाँ जहाँ पे joints है वहां पे, या फिर clavicle, shoulder में कैसा, शोल्डर में ऐसा सपोर्ट देता है वो पीछे से टू योर शोल्डर. सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर शोल्डर. आई एम वेरी वीक एट माय ड्राइंग. सो फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस इज योर बैक.
ओके। और ये शोल्डर को पीछे से ऐसे फिगर ऑफ 8 पैटर्न में सपोर्ट देता है। व्हाई? व्हेन देयर इज अ क्लैविकल इंजुरी। क्लैविकल इज योर ब्यूटी बोन, योर, ओके, दिस इज योर क्लैविकल। सो जब भी क्लैविकल इंजुरी होता है उस टाइम ये फिगर ऑफ 8 बैंडेज हम यूज करते हैं, या फिर जब किनी इंजुरी होता है और समथिंग एल्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। Then recurrent stump bandage. Recurrent stump bandage, after a few circular turn to anchor the bandage, the initial end of the bandage is placed in the center of the body part being placed. Example, used in amputated limb. Okay, I think this again it has come. Ignore it. रिकरेंट स्टम्प बैंडेज में क्या होता है कि पहले फ्यू सर्कुलर टर्न्स लेते हैं हम बैंडेज के, और उसके बाद में टू एंकर, एंकर मतलब टू फिक्स इट, फिक्स समवेयर, ओके, द बैंडेज। तो उसमें द इनिशियल एंड ऑफ बैंडेज इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी पार्ट, मतलब बीच में प्लेस करते हैं, सेंटर में, और उसके बाद में उसको फिक्स किया जाता है। एम्प्यूटेड मतलब लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज पेशेंट में उनका जो वुंड है वो जल्दी फील नहीं होता है या फिर जल्दी हील नहीं होता है, तो हमें कभी कभी वो पार्ट एम्प्यूट करना पड़ता है। एम्प्यूट मतलब काट देना पड़ता है, बॉडी से अलग करना पड़ता है। सो इन मेडिकल टर्म वी कॉल इट एज एम्प्यूटेड लिम्ब। ओके, यू कैन सी इट हियर इन द पिक्चर। तो उस टाइम हम रिकरेंट स्टम्प बैंडेज यूज करते हैं। ओके, T bandage. T bandage, it is used to secure rectal and perineal dressings. Okay, rectal, that is downwards, and perineal dressings. Double T bandage is used for males and single T bandage is used for females. Take into the consideration. The strips of T bandage are brought between the patient's leg and is pinned to the waistband in front. हम क्या करते हैं, दोनों पैर के बीच में से वो बैंडेज लेते हैं जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, और उसके बाद में उसको हम इन फ्रंट ऑफ द वेस्ट, आगे वाली साइड से वेस्ट के पास हम उसको सिक्योर कर देते हैं। जब हम उसको पैर के अंदर से लेते हैं तो उस टाइम वो सिक्योर हो जाता है और वो एक टी पैटर्न फॉर्म करता है, इसलिए हम उसे टी बैंडेज बोलते हैं। देन आई बैंडेज, here in bracket it is also called as monoocular bandage. Okay, monoocular bandage मतलब only single eye is covered. Then biocular bandage. Biocular bandage matlab both eyes are covered. Figure of 8 technique is used, as you can see here. Little bit it is resemblance is like figure of 8. So why we are taking it under the ear? Because it should get fixed over it. Figure of 8 technique is used. Start from the right temporal. Take one turn around head, down over the left eye, under right ear, over right eye, to right to left temple. Temporal bone is this one. This is the what temporal bone is. Okay. So repeat around head to right temple following previous pattern until both eyes are covered. Okay. Start कहाँ से करते हैं हम? Right temporal bone से. This is my right temporal bone. Around head, हेड के अराउंड, डाउन ओवर द लेफ्ट आई, लेफ्ट आई से नीचे लेना है, अंडर राइट ईयर, उसके बाद में राइट ईयर के नीचे से लेना है, देन ओवर राइट आई टू लेफ्ट टेम्पल, लाइक क्रॉस वाइज हम जाते हैं, और हम कान को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कान के नीचे से, सो दैट दिस विल गेट सिक्योर, मतलब टाइट हो जाएगा। हम ऐसा भी बांध सकते थे, पर अगर हम ऐसा बांधेंगे तो वो लूज हो जाएगा। जब भी पेशेंट कोई मूवमेंट करेगा, ये ये जो बांधे हुआ बैंडेज है, एक तो वो नीचे आ जाएगा या फिर वो ऊपर आ जाएगा। अगर नीचे आएगा तो पेशेंट को वैसे भी इंटरप्ट होगा, या फिर ऊपर भी चले जाएगा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ द बैंडेज नाउ? ओके, सो इसलिए हम उसको कान के नीचे से लेते हैं ताकि वो टाइट हो जाए और सिक्योर हो जाए। दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंडेजेस। ओके, eighth one, ear mastoid bandage. Where is your mastoid bone? Behind your ear. Okay, this bone is your mastoid bone. Now, bandage with 2 feet width and 5 yards length is required. Make circular turns around head above ear, beginning on affected side. Follow with circular turns. The first turn is taken beneath occiput and carried high over to opposite side. I've also shown you in the picture where the occiput bones are. Can you see the skull? The green portion is the occiput. Okay. Now, what we do is, I have already told where the mastoid bone is. Okay, if there is injury to the ear or to the mastoid bone, that time we apply this bandages. You can see in the picture, ear is also covered and the mastoid bone is also covered. Then jaw Barton bandage. I hope picture is in the next slide. First, we will see what it is. Used in fracture of lower jaw and to hold dressings on chin. Okay, chin is this part. Then bandage of inches width and 5 to 6 yard length is required.
Begin at nape of the neck below occiput. I've already shown you all where is occiput and this is the nape of the neck. ठीक है, मराठी में हम उसको मान बोलते हैं, so that is what nape of the neck is. Okay, carry bandage obliquely up behind and close to ear, behind front of left ear to head and close to ear, then under chin and up. I'm really sorry. Some mistakes are there in the slide, but it's okay. I'll explain you all. I've already told you that oblique is like this line. एक second. This is oblique, okay? Slanting one. So here it is what it is. कि jaw Barton bandage. I'll show you the picture first. So this is what a jaw Barton bandage is. We have to take it from the nape of the neck. Why? Why we take it from the nape of the neck? So that it gets secure. Fix हो जाता है वो. इसलिए हम उसको पीछे से लेते हैं और यहाँ पे लगा है तो इसको सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना. So इसलिए पीछे से लेके फिर ऊपर से लेते हैं so that the jaw gets supported and it is also supported because we have taken it from behind, from nape of the neck. Okay. This is what jaw Barton bandage is. Now, 10th one, Capeline bandage. Capeline bandage उसको हम head bandage भी बोलते हैं. A double roller bandage of 2 feet width and 8 yards length is required. अगर हमने ये length और width नहीं भी ध्यान रखी, it's okay. But you should only remember is whenever I'm showing you this pictures, right? Why? Because आपको एक idea आ जाए कि वो bandage है कैसा. If you will draw same picture in your exam, for example, अगर आपके exam में ये question आए और अगर आपको नहीं भी समझा क्या लिखना है पर अगर आपको ये डायग्राम पता है कैसा ड्रॉ करना है तो आप ऐसा डायग्राम बना के और जो आपको समझ रहा है वो लिख के एग्जामिनर विल नो या दिस चाइल्ड नोज द आंसर ओके एंड ही विल गिव यू मार्क्स. सो केप लाइन बैंडेज उसको क्या बोलते हैं हम हेड बैंडेज. उसको बोलते हैं डबल रोलर बैंडेज ऑफ 2 feet width and 8 yards length is required. Place center of bandage in middle of forehead, like middle and forehead, and carry roller in opposite direction to occiput. ठीक है. Cross rollers one over other. The roller in inferior position is brought overhead to middle of forehead. I'll show you. This is what Capeline bandage is. We start from the center of forehead, okay, and then we secure it around the head. So this is what Cape roller bandage. I hope everyone got it. उसका लेंथ क्या है उसका विड्थ क्या है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर याद रखा तो वेल एंड गुड, नहीं भी रखा तो इट्स ओके. पर वो बैंडेज दिखता कैसा है और वो बैंडेज कहाँ यूज कर सकते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेम ऑफ बैंडेजेस. ओके, सो आई होप यू गॉट इट what I mean to say. 11th was shoulder spica. This is the last bandage. A bandage of 2.5 or 2 inches width and 8 yards length is required. The spica may be either descending or ascending. एक तो वो ऊपर से नीचे जा सकता है या फिर नीचे से ऊपर आ सकता है. Depends on where the injury is. The ascending type is most commonly used. While applying bandage, stand at side which is to be bandaged. A pad must be placed in axilla. Axilla मतलब बगल. बगल का दूसरा नाम होता है एक्सिला. ओके, तो लास्ट में जब रहता है तब वो पैड जो रहता है वो हम एक्सिला में प्लेस कर देते हैं. आई शो यू द पिक्चर. So yes, this was all about today's topic. I think it is very long, but it's okay. So yeah, that's it about bandages. I hope you all got it. If you have any doubts, you can tell me. Okay, so thank you for hearing me. Thank you.